we don't have very good exposure to the industries and things like SAE, which is very beneficial for students. So when CS sir came to our college, so he introduced us to about SAE and the importance of SAE. So when we got to know that it is really very important for us, so we decided to create a club, SAE Collegiate Club in our college. So for the first problem we had, it was the problem that like us, other students also didn't know about SAE. So first of all, we ran a class-to-class campaign to tell students about the SAE and the benefits of SAE. So we did a class-to-class campaign, and we told them that that's how SAE can help them for their future and how SAE can help them developing themselves. So after this, most of the students were convinced and they wanted to join SAE. So that is how we created a club. And after the creation of club, then the second thing was nomination of office bearers. So we first decided to make nomination for all the office bearers. So we just created a notification of the SAE nomination to every SAE member. Then those who were interested in the SAE, they came here and nominated for them. Then we selected the SAE office bearers. Now coming to our vision and future activities. So our vision is to make the students better and more industry optimized by day by day. So basically, at first we before this event, we went to a industrial visit at BPC Limited, that is Bharat Pumps and Compressor Limited in Delhi. So our future activities would be, we'll try to do more and more activities like that, and also some personality development and other industrial visits and seminars which can develop the students as well as their personalities. So that is how our vision. That is what our vision is, and that's how we'll work in the SAE in future. Thanks a lot. Thank you, Arpit, for sharing the vision with all of us. Next in the line, I would like to call the chairperson, Arpit Kumar, vice chairperson, Arvind Gupta, and treasurer, Amish Tiwari, for giving a short presentation on SAE India. Mr. Sandeep Sharma sir, General Manager of Minda Industries, to deliver us a technical talk for our benefit. But before that, I would like to present a brief profile of Mr. Sandeep Sharma sir. Mr. Sandeep Sharma sir has got a rich experience of 19 years in R&D, design, engineering and techno-commercial activities. He joined Minda Groups in 2015, and prior to this he was in Luminous Power of Technology and AVL India Private Limited. Worked as a part of R&D Technology and AVL India Private Limited. Design in field of electronics, hardware, embedded software and solution of designer since the beginning of his career. At present, he is working in DGM Corporate Technology for the entire Uno Minda Group with the mandate developed to bring new product technologies. He finishes his BE from NIT Kurukshetra in 1997. Further, he pursued and obtained an MS degree in software system and postgraduate management degree in operational management. Thank you very much for the introduction. Good afternoon, everyone. So, this is the most difficult part now. You are waiting since morning, like this is the main agenda. One of the main agenda for a special lecture, but normally technical lectures make you bored. You become sleepy. So, technical things you discuss every day. You know, in school, colleges, you study whatever your subject is.
I'm not there to coach you. You know what is I square R or what is the stress analysis. You know better, you know. And your teachers can teach you better than anyone else. Anup sir given introduction about SE. It is all about society of automotive engineers and talk about automotives. But what about the other discipline? Mechanicals is part of automotive, everybody knows it. But what about other civil, electrical, electronics, software, and so on? So I'll take you through this presentation, where this automotive industry is going and what kind of skills required in future. Right? Before starting this presentation, I just want to know which skill is on top. कॉलेज में थोड़े डिबेट होते हैं ना, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, टॉप which one is good one? Mechanical is good. Okay. डिबेट होता है ना, हमारे टाइम में भी होता था. सिविल? No. Software? Okay. So why I ask this question? Same debate happen in industry, and it leads to attitude. It show your attitude. When you go in an organization, it is one. It is made by different functions. Where you will find people from finance, you will find people from electrical domains, electronics, someone from production, someone from quality, someone, different functions. Even a security guard, right? With my 20 years of experience, I know you can't perform or you can't deliver anything without, a teamwork. The first thing you should learn, respect each other. Everybody is important, right? This is something which is required as an attitude. Otherwise you will be in frustration. When you in college you say you are the greatest one, mechanical is the top one, and in market you will find out nobody is asking about you. Same for the electrical, same for the electronics. It depends on the organization you are going to join. कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा ज़्यादा होगा, कहीं पे सॉफ्टवेयर ज़्यादा होगा, कहीं मैकेनिकल ज़्यादा होगा, right? So first thing, you should respect each other. Second thing, whenever you sit for any learning class, go to your professor, go to your seniors, go with some notepad, right? Nobody have notepad. Presentation I will not share, and you will forget most of the things. So it should be a habit that whenever you go anywhere, this thing I learned when I joined organization, and today even लोग कहते हैं यार तू पहुंच जाता है और एक नोटपैड उठा लेता है. क्यों लेके आता है? फिर पता चलता है अच्छा सब कुछ दिमाग में, you can't note down, you can remember whenever you want to refer. Now let us come to the topic, which is future mobility and electrical vehicles. Automotive means what? कोई बताएगा? क्या है? For example, let's take car, bike, aeroplane. These are all comes under the automotive category. उसमें क्या क्या होता है? Engine. Let's start with engine. Other thing? Turbine, yes. Fuel. Chassis. Suspension. Combustion chamber.
chamber. It's part of engine. Okay. What else? अरे अभी तो ऑटोमोबाइल शुरू भी हुआ. हाँ? Okay. I'll come to that. Coming to that. After finishing this, I'll come to that. बस Sir, electrical components. Sir, electrical components in the containment system. पूरा Sir, wiring harness. वायरिंग हार्मोनिक्स. Wiring harness, yes. और कुछ? अच्छे. क्रिकेट में बोला है कि ज्ञान बट रहा हो तो ले लेना चाहिए. पीछे वाले सबसे ज्यादा बोलने चाहिए. स्टार्टिंग में पीछे वाले बोल रहे हैं, ये हम नहीं है. और क्या होता है? You know, I prepared this presentation specially for this program. Usually I do product development or other technical skills where I feel people sleep, or it is something connected to your futuristic thing. But today I am covering a topic which is hot in the industry. Today people are talking about it, and this topic I have selected so you can plan your career. You can think what is available in the market and where you should focus. ठीक है, स्किल खत्म हो गए. Aerodynamics, infotainment systems, which include the softwares, hardwares, electrical engineering, right? Anything else? Lighting. भूल गए लाइट बनाने के लिए ऑप्टिकल इंजीनियरिंग, कार बनाने के लिए स्टाइलिंग. सो यू हैव स्कोप. एवरीबडी हैव a scope, right? Civil engineers required, for the future mobility. I'll show you how. Right? Software engineers, mechanical engineers, everyone. So next one. These are the different topics I will cover. I will talk about how automotive evolving, what is happening in automotive sector. Then I talk about electrical vehicle, the differences, and what is the electrical vehicle, which is maybe everybody wants to know about it. Then about the future technology beyond the electrical or the electric vehicles, what is coming. Then the skill requirement. Where you should be ready, what kind of skills. Skill is a topic where everybody is struggling in your organization. So don't worry. Wherever you are, whatever you are studying, you are okay. Next. So ये तो सबको पता ही होगा. Next one. Next. So 1400 में first vehicle went हुआ. Then it took another 400. कोई बात नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है. Fonts are small. Okay. Font are small. Okay. This is a problem. Okay. So next one. So next schemes are, and if you see Benz invented vehicle in 1885. But invention doesn't mean anything, until and unless you make it commercialized. So that's Mr. Ford, who came to pictures and who made it available for you. Next. So this is a very popular picture, and today it is very popular. This is the picture of 1900 New York City. You can't, few people can see this. यहाँ पे सारे घोड़ा गाड़ियाँ हैं, right? सारा. Change this. 13 साल के बाद इसमें घोड़ा गाड़ी दिखा हुआ है. अनूप सर बता देंगे, और हमारे यहाँ सीनियर प्रोफेसर जो बैठे हुए हैं
पहले हमें तांगे दिखाई देते थे, आज की तारीख में तांगे गायब हो गए, गाड़ियाँ। So this is the revolution happened, right? Next. This is the evolution: steam engine, then gasoline engine, diesel engine, IC engine, moving toward hybrid car, and moving towards now electric vehicles, and then we are talking about fuel cell car. आपने सुना है fuel cell car के बारे में? हाँ? Only one or two. So we are heading towards a new type of vehicle, automotive, and this ये क्रांति बहुत तेजी से हो रही है. Right? Next. Focus on these few slides. These are more informative, required for your future, even good for faculties. They will teach to their students how they need to prepare. Automotive में कुछ भी डेवलप करना है, need or necessity is the mother of inventions. This is famous. So these are the different necessities around which all the technologies, innovations, and product development happen. I am in R&D, working in R&D since 20 years. Product develop करना मेरा काम है, अलग-अलग में automotive से related different हैं, power I have done now research also development work. Safety and security, वो किसी न किसी के around होंगे. Safety and security आजकल vehicle में safety and security is important, right? कार कहीं लग ना जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, एयरबैग निकल गया था. This is one. What are other features are available? I will let you know. Safety and security. Then the green technology. आज की तारीख में pollution बहुत बढ़ गया है. तो IC इंजन चलते थे, डीजल इंजन चलते थे. Now we are heading towards electric vehicles. We are heading towards BS6. अब ये BS4, 6 क्या होता है शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा. But I let you know. ये एक I'll cover. Next slide. Then comfort. Back. Comfort and convenience. आपको तो गाड़ी में बैठने में आराम चाहिए ना, तो गद्दे की तरह. तो वो भी एक फील्ड है जिसके ऊपर बहुत रिसर्च चल रही है. Then लास्ट में गवर्नमेंट रेगुलेशन. गवर्नमेंट को फोकस होता है मास के लिए. तो then they come up with something. कस्टमर को चाहिए कॉस्ट कम से कम हो, बनाने वाले को चाहिए कॉस्ट कम हो, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए which is safe. This is required features in your vehicle. तो वो उस हिसाब से. Next. ये एक स्लाइड है. I will share few slides with the those are not confidential. I will share with the management. This is something, a process through which you develop the product. Not develop the product, to choose which product you need to develop or you should not. उसके अंदर कितने सारे काम करने होते हैं. Now we are sitting in college, but global automotive में क्या चल रहा है, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, you have to study. उसके बाद इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट में you have to run around, इंटरनेट देखना होता है, जाना होता है, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने होते हैं, you have to see, study. उसके बाद ग्लोबल मेगा ट्रेंड देखने होते हैं, फ्यूचर में कैसे ट्रेंड चल रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल Audi, BMW, ऐसे व्हीकल्स में क्या ट्रेंड आ रहे हैं, किस फीचर्स की तरफ जा रहे हैं लग्जरी व्हीकल्स. वही ट्रेंड धीरे-धीरे हमारी गाड़ियों में जा रहा है. एक गवर्नमेंट रेगुलेशन अथॉरिटीज है, नीचे की तरफ देखिए तो उनके सारे चेन, मतलब मटेरियल्स कहाँ से आता है, मतलब यू कांट डेवलप समथिंग व्हिच इज यू कांट प्रोड्यूस, राइट. आपको सारी चीजें ध्यान देनी है. उसके बाद मार्केट भी देखनी पड़ती है कि मार्केट में किसकी डिमांड है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, इंडियन स्पेसिफिक प्रोडक्ट टेक्नोलॉजीज क्या है, कैपेबिलिटीज क्या है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या है, एंड देन फाइनली यू मेक ए प्रोडक्ट रोड मैप कि मैं इन पे काम करूंगा, मैं अपनी लोग लगाऊंगा, पैसे लगाएंगे, रिसोर्स लगाएंगे, देन यू डेवलप द प्रोडक्ट. नेक्स्ट. सो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में कैसे एवोल्यूशन हो रहा है, कैसे हुआ है और कहाँ हम पहुँच गए और कहाँ पहुँचने वाले हैं. दिस इज, जैसे पहले मैकेनिकल होता था,
मैकेनिकल देन पैसिव सेफ्टी, रिलायबिलिटी, सेफ कंफर्ट, इंटेलिजेंस में चले गए, थोड़ा सा इंटेलिजेंट व्हीकल हो गए। देन नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द रिस्पांसिबल व्हीकल। मींस व्हाट, सीट बेल्ट होती थी, फिर उसके बाद एयर बैग में पहुंचे, ESP कॉलिंग चल रहा है, आता है ना SOS दबा दो बटन, कॉलिंग चल रही है, ACC लैन कीपिंग, अर्बन ड्राइविंग कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट होता है कोई व्हीकल आपकी बगल से जा रहा है, आपको दिखाई नहीं देता, ठीक है, बट अब वो फीचर भी आ गया कि आपका व्हीकल आपको बताएगा कि ये ब्लाइंड स्पॉट में कोई व्हीकल है, यू डोंट टर्न, राइट, अदरवाइज यू विल हिट। लेन में है कोलिजन वार्निंग, कोई गाड़ी टकराने वाली है आगे पीछे, वो सब वार्निंग है। इमरजेंसी ब्रेक, अपने आप ब्रेक लग जाएगा, यू नीड नॉट टू। और उसके बाद फाइनली ये धीरे धीरे चल जा रहा है ऑटोनोमस व्हीकल की तरफ, जहाँ पे आप के ऊपर डिपेंडेंसी ही ऑलमोस्ट फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट, ये SAE की कुछ गाइडलाइन है। देयर आर 5 लेवल डिफाइंड। जैसे पहला लेवल था जिसमें कोई रेगुलेशन ही नहीं था। फर्स्ट लेवल है जिसके अंदर ड्राइवर, स्टीयरिंग और ब्रेक दे दिए गए हैं। ब्रेक है, स्टीयरिंग सिस्टम है, उसको कंट्रोल करके लोग चलाते हैं। सेकेंड लेवल के अंदर उसके अंदर स्टीयरिंग, पावर ब्रेक्स और कुछ कंट्रोल सिस्टम उसमें ऐड हो गए। नेक्स्ट के अंदर नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कंडीशनल ऑटोमेशन, व्हिच इज ड्राइवर मस्ट बी रेडी टू इंटरवेन। उसको वार्निंग्स मिलती रहती हैं। जैसे अभी आप आर पास यूज करते हैं, जैसे गाड़ी पीछे लेते हैं, कुछ बैठे भी होंगे, कुछ यूज करते हैं, तो कैमरे में दिखाई देता है, देन यू टेक ए डिसीजन, बीप 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 शुरू होती है, रोक देते हैं, राइट। सो इस तरह के इंटरवेंशन शुरू हो गए हैं आज की तारीख में, एंड वी आर एट लेवल 3 बट नॉट येट क्रॉस। उसके बाद हो जाएगा कि ड्राइवर मे नॉट बी रेडी टू इंटरवेन। ड्राइवर अगर इंटरवेन नहीं भी करेगा तो भी गाड़ी अपने आप डिसीजन लेने वाली है, राइट। और लास्ट में हो जाएगा जहाँ ड्राइवर की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो ऑलरेडी 4th स्टेज पे काफी सारे व्हीकल आ गए हैं। इंडिया के अंदर वी आर स्टिल एट नंबर 3। 4th में ग्लोबली ये व्हीकल्स आ चुके हैं। 5th स्टेज के लिए वी आर वर्किंग फॉर इट। इन नेक्स्ट 5 or 10 years वी स्टार्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग, राइट। गूगल और 1-2 कंपनियों ने दे हैव ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेटेड ऑटोनोमस।